All right, so good afternoon and welcome everybody here. So the idea of this session is to talk about GMAT, especially GMAT focus, because as we all know that now the exam is not that GMAT classic, but it is GMAT focus, and in many ways it has come to resemble our CAT, our usual old familiar CAT. So काफी जो areas में अभी एक CAT से resemblance हो गई है and also, they made it on one hand a little simpler, reducing the number of topics, and also we'll discuss some changes that have come over. And also, more importantly, the relevance. इसकी क्या relevance है? Let me just uh, talk about the relevance here first, because जो generally हमने देखा है कि most of the candidates which we have, they are for CAT. And CAT obviously offers admission to all the IIMs and a lot of associated institutes. And then people appear for SNAP, NMAT, and ZAT. So to complete the whole thing. Now, GMAT, obviously for multiple reasons. One was, of course, thought that GMAT के through आपको सिर्फ foreign universities में admission मिलता है. Then of course we had the ISB here. सो जीमैट के थ्रू हम क्या क्या टारगेट कर सकते हैं वो भी देखना है क्या इंडिया में कुछ कॉलेजेस एक्सेप्ट करने लगे हैं तो यस देयर आर मेनी कॉलेजेस दैट हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग GMAT. So which are those courses which are that would be worthwhile looking at. तो GMAT के साथ में आपको एडवांटेज ये है that you don't need to appear it only once in a year, right? The CAT is a long drawn 1 year complete focus, and then it is quite unpredictable as we've seen, and many times it always is good to have a backup. तो उस हिसाब से GMAT is important. तो अब GMAT जो है इससे हम क्या क्या कॉलेजेस में टारगेट कर सकते हैं ये पहले देखते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन कॉलेजेस. अब दो तरीके से देखना है इसको. वन इज कि रेगुलर 2 year PGDM या MBA जो हम बोलते हैं, दैट इज द मोस्ट सॉट आफ्टर डिग्री. तो वो कौन से कॉलेजेस GMAT कोर्स एक्सेप्ट करते हैं उसमें, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं काफी कॉलेजेस के 1 साल के या 1.25 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के लोगों के लिए, वो एक अलग चीज है. I'm sure there are some candidates maybe among you, or there are many other candidates who would want to appear in GMAT because of that. उसको टारगेट करते हुए. तो अब इसमें एक सबसे प्रोमिनेंट अगर हम देखें तो एक SPJ IMR है, राइट. सो SPJ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च, दिस इज अमंग टॉप 10. In fact, I would rate it at after IIM, ABC, and FMS and XLR. I would Jamshedpur. I would rate it at 6th. So SPJ IMR Mumbai is really worth targeting, and it accepts the GMAT score. And you can do the PGDM in finance or marketing or information management or supply chain. So these are the, or operations as they call it. So you can do your PGDM from SPJ IMR. Then we have, of course, IMT Ghaziabad, okay, IMI Xavier, then Great Lakes, Tapni, KJ Somaya, Goa, 4, LBS, BIMTech एंड माइका. इस लिस्ट में एक नहीं है क्योंकि मैं ऐड कर दूं, और वो है IIFT का बिजनेस एनालिटिक्स. तो IIFT also offers, apart from MBA in international business, they offer an MBA in business analytics, and for that they accept GMAT. So जिन्होंने इस बार की IIFT की शॉर्टलिस्ट देखी होगी उन्होंने देखा होगा कि वो दो में डिवाइडेड है. वन इज फॉर MBA in international business and the other is for MBA in business analytics at IIFT. So this is also a good degree worth, if at all you are interested in getting into analytics and that side. तो ये काफी worthwhile हो सकता है, right? So these are certain colleges that one can target through GMAT. Okay, अभी I think gradually as we go along, more and more colleges will start accepting. वो अभी देखना है, but that list should increase. Apart from that, the biggest draw for GMAT is obviously ISB Hyderabad and Mohali, which is the 12 months full-time program and which needs a 2-year work ex. ठीक है, ये जितने भी प्रोग्राम्स हमने देखे यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. whereas here if you see this program, this is for 2-year work ex. And then of course people with longer work ex, they can target these institutes. So अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो 4 साल का है, कुछ कॉलेजेस में 5 साल हैं, XLR जैसे 5 साल. So यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 12 months थ्रू GMAT मिलता है. ठीक है, IIM इंदौर है. Then you have these MDI also and other programs.
also. So if you talk about the biggest draws for GMAT would be, to my mind, SPJ, IFT, business analytics. Of course, depending upon where you are targeting, this is also a good college. IMT is also a good college, and so are Xavier's and TFI. And many who are not able to get good CAT scores because of the unpredictability can definitely look at this. And of course, ISB, this is a major draw because यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है because यहाँ पे आपको फिर 4+ years work exchange. So this is about the relevance of GMAT for these various courses. And of course, not to mention and needless to mention the avenues that open up for doing MBA abroad. So इनमें से आपको अब now, is there any query that you have among these colleges or इसकी relevance? See, I'm not going to do this a very long session. Okay, बहुत ही short छोटा सा session है. इसमें मैंने एक तो ये MBA कहाँ पे relevant है, because ये एक थोड़ा सा doubt होता है कि कहाँ पे applicable है. Now the one first that should be clarified, and then we'll talk about कि इसमें है क्या, what all are the various areas and what is the difference from the earlier thing, and then we can talk about what we have to offer. Is that the pattern of this? Yes, Shubhanshu. सर आई दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्कएक्स. तो इसके अंदर अपन जब जैसे जो अपना कैट वाला रहता है उसके अंदर अगस्त तक का वर्कएक्स कंसिडर होता है, राइट? तो इसके अंदर कैसे रहता है, जस्ट बिफोर फिलिंग द फॉर्म उसके पहले का वर्कएक्स या फिर पूरा जब एग्जाम? नहीं, जैसे अब अगर आप ISB की बात करो, है ना, तो ISB जो है वो अब जब आपसे एप्लीकेशन मांगेगा इस बार, तो वो 31 मार्च 2024 तक का मांगेगा. ओके, सो इस साल अगर आप एप्लीकेशन ISB की डालोगे अगले साल के लिए, है ना, इफ यू अप्लाई इन ISB, then by 31/3/2024 you should have completed 2 years. Yes. Any question? Somebody has. So does this answer, or do you fulfill this criteria? नो सर, अकॉर्डिंग टू दिस मैं निकल. तो आपका कब तक होगा? मेरा तो नेक्स्ट अभी हो जाएगा 31 दिसंबर 2024. अच्छा, तो उसमें तो टाइम है फिर आपका. राइट, उसमें टाइम. ठीक है. देखो, जैसे अगर आप कैट की बात करोगे ना, तो कैट में क्या होता है, कैट में जब आप अगस्त में फॉर्म आते हैं, तो लेट्स से अगस्त 2024 में जब फॉर्म आएंगे, तो उस टाइम पे फॉर्म में आपसे वो जुलाई तक का देंगे कि जुलाई 31 तक का आपका कितना वर्क है. ठीक है, ये जब फॉर्म भरोगे आप. लेकिन जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे कॉलेजेस के, फिर इंडिविजुअल फॉर्म भरोगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज, तब वो फिर चेंज हो जाता है. देन यू कैन गिव बिकॉज ऑब्वियसली तब तक 6 महीने इसमें जा चुके होते हैं. तो दैट्स द वे इट वर्क्स. All right. Any other query on this part before we move? ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं. Let's move now to the pattern of the exam. So GMAT focus का pattern क्या है? So अब इसमें earlier as we know that there were 4 sections out of which 2 were scored and 2 were rated. So verbal and quantitative were the yes, Shubhanshu. सॉरी सर, एक No और problem. क्वेश्चन है. हाँ, सर वो अपने एक नॉर्मल कोर्स भी रहता है लाइक फॉर अंडर ग्रेड्स ओनली इन ISB एंड दिस, नहीं, वो YLP राइट? होता है. या यंग लीडर प्रोग्राम, राइट? लेकिन वो उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है जब आप सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में. अच्छा, ओके. Okay, so when you are in second year of your graduation or final year of your graduation, then you apply and then you appear for your GMAT and all, and then आपको अगर एडमिशन मिल जाता है तो आपको 2 साल का वर्क एक्स कंप्लीट करके आना है फिर उसमें. ओके सर. सो यू कैन ज्वाइन स्ट्रेट अवे आफ्टर योर ग्रेजुएशन. ठीक है, तो ये फर्क है उसमें. पर उसका एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ेगी व्हाइल ड्यूरिंग कॉलेज ओनली. ओके सर. ऑलराइट. तो अब पहले जैसे वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता था, और IR होता था, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, और एक AWA होता था, एसे राइटिंग. तो ये 4 सेक्शन होते थे. ठीक है, और एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन भी 3 घंटे से ऊपर होता था. नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इट टू वेरी वेरी मैनेजेबल 2 hours and 15 minutes. तो एज यू कैन सी, दिस विल बी एन एग्जाम ऑफ 2 hours and 15 minutes. ओके, सो यू विल हैव वर्बल रीजनिंग 23 क्वेश्चंस. इसमें 2 ही पार्ट हैं. So पहले एक और होता था सेंटेंस करेक्शन, which means grammar. So grammar has been taken off completely. So you have 23 questions of comprising CR and RC. So 45 minutes में आपको करना है. Then
क्वांटिटेटिव रीजनिंग 21 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज है कि इन्होंने ज्योमेट्री जो है वो पूरा हटा दिया। ठीक है, तो ज्योमेट्री वाज अ बिग पोर्शन दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड। एंड ऑल्सो जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्वेश्चन आते थे, दो टाइप के आते थे, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग विच मीन यूजुअल क्वेश्चन, और एक डेटा सफिशिएंसी। तो डेटा सफिशिएंसी जो है वो यहाँ से हटा दी गई है, वो यहाँ पे ऐड कर दी गई है, बट ऑब्वियसली इन अ लिटिल डिफरेंट फॉर्मेट। यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से दिया गया है उसको। सो हियर यू हैव 21 क्वेश्चंस एंड यू हैव 45। Then you have data insights. This is a new section that has been introduced. This is to do with multiple types of data related questions. One is data sufficiency. Data sufficiency में भी अब कोई बहुत hardcore quant वाले question नहीं आते हैं. Then you have multi-source reasoning. यहाँ पे आपको अलग अलग sources से, there could be some verbal source, there could be some table, there could be some chart, graph. So multi-source say you will be given a problem. You have to figure out the solution by taking inputs or a solution or information from different sources that have been given. है ना, कुछ कहीं रिटर्न फॉर्म में होगा, वर्बल फॉर्म में होगा, कुछ टेबुलर फॉर्म में, कुछ क्वांट फॉर्म में होगा, तो वहां से आपको इकट्ठा करना है। देन टेबल एनालिसिस में आपको एक टेबल बना के दे देंगे और उस टेबल में से इंफॉर्मेशन आपको डिराइव करनी है, राइट। एंड देन ग्राफिक्स इंटरप्रेशन में आपको, दिस इज लाइक योर डीआई, obviously not as intense. So you will have different kind of charts, bar charts, pie charts, or scatter plots, or something else, and you have to figure out the information. And then there is another type of question which is a little new to people who have not been exposed to this, which is a two-part analysis. यहाँ पे आपको एक छोटा सा लेट्स से एलआर टाइप का कुछ क्वेश्चन दे देंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, और उसके बेसिस पे दो कॉलम बना देंगे और 5 स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे। एंड देन दे विल से अमंग दीज वन मस्ट बी ट्रू एंड वन मस्ट बी फॉल्स। एक इनमें से मस्ट बी डेफिनेटली ट्रू है और एक डेफिनेटली फॉल्स है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। तो इस तरह से 2 पार्ट एनालिसिस है ये। सो दिस ऑब्वियसली इज अ बिग चेंज फ्रॉम द अर्लियर सेटिंग, क्योंकि ये भी अब स्कोर होगा इसका, है ना। पहले जो इंटीग्रेटेड रीजनिंग था, इंटीग्रेटेड रीजनिंग जो था उसमें भी ये सब था। अगर आप पहले का देखेंगे तो उसमें ये भी था, उसमें ये भी था, उसमें ये भी था, और उसमें ये भी था। सिर्फ डेटा सफिशिएंसी उसमें नहीं थी, अदरवाइज ऑल दीज वर देयर। But now the difference is this will be not rated, but this will be scored. So exam has become simpler in some ways, क्योंकि हमें ज्योमेट्री पूरी हट गई है यहाँ से, और डेटा सफिशिएंसी हट गया है यहाँ से, which used to pose challenge, और यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन हट गया है। So we have to tackle only 2 areas. So to that extent, exam has become obviously simpler, and but then this is the additional challenge which has been thrown in. So overall, it has become more interesting, I would say. Overall, it has become more balanced. It is more of a test of your reasoning rather than your, you can say intelligence or anything of that sort. कि आपका कोई ऐसा नहीं टेस्ट कर रहे हैं कि आपका आईक्यू कितना है, ऐसा नहीं है। इट इज मोर ऑफ योर रीजनिंग एबिलिटी, राइट। तो इस तरीके से ये टेस्ट को उन्होंने डिजाइन कर दिया। तो इट इज मच मोर बैलेंस्ड, आई वुड से, इन दिस करंट फॉर्मेट। सो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेट्स लुक एट व्हाट ऑल इट एंटेल्स, राइट, ईच सेक्शन. So when we talk about critical reasoning, so I'm sure most of you who have studied with me earlier know what all we've done. All these kind of questions. It is just that they've been divided into various areas, right? So अब वो उसका कोई बहुत ज़्यादा significance नहीं है. Don't look too much look for meaning into it. Analysis, so bold face type questions होते हैं where एक ही पैसेज में 2 पार्ट को बोल्ड फेस कर देते हैं, एंड देन यू नीड टू फिगर आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। देन स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए। then inference, paradox, right, assumption, logically completes। यहाँ पे एक इसका इसको आप बोल सकते हो कि लास्ट का जो है वो एक सेंटेंस छोड़ दिया या आधा रख दिया, और आपको उसको लॉजिकली सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देन क्रिटिकिंग, जिसमें इवेलुएटिंग द आर्ग्यूमेंट, फ्लॉज इन आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, लॉजिकली कंप्लीटिंग, स्ट्रेंथनिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए। और फिर प्लान। सो इतने टाइप के क्वेश्चंस इसमें हमसे पूछे जाते हैं। आई थिंक आई मीन whoever has been our student, they would have got good amount of expertise in this, and और नहीं है तो definitely we can work this to our advantage. So CR is half of verbal reasoning. Then you have RC, right? So RC में again the different types of questions. Main point related question, detail, supporting idea, inference, function, application based, and style and tone based. So these are some types of questions that are asked. Now RCs compared to CAT are a little different here.
इन द सेंस कि थोड़ी लेंथ भी इनकी कम होती है, कुछ आरसी छोटे होते हैं which have only 2 questions or 3 questions, कुछ आरसी थोड़े से बड़े होते हैं जिसमें 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं. तो आरसीज आर ऑल्सो not of similar length and similar number of questions. So that's the difference between an RC of GMAT and an RC of CAT. And also, you can say that GMAT RCs are a little more predictable in the sense that if you practice sufficient number of GMAT RCs, then you would get a good amount of expertise. Whereas CAT RCs are still quite unpredictable, and sometimes questions sometimes are not very logical. मतलब आपको एक ना एक दो कुछ ऐसे मिल जाते हैं. Whereas if you look at GMAT CR and GMAT RC, you will find that logic will always be there, and just need to figure it out. So they are much more logical questions because a lot of research has been done, right? So as I keep saying that for every question in GMAT, they spend almost $25,000 because that's the kind of research that they do. So they make each and every question quite logical, right? So it's a beautiful exam, or these are beautiful sections to actually work upon because यहाँ पे आपको एक काफी solid logic मिलेगा. So CR, RC, obviously we take care of that. Then we come to quantitative ability. So quantitative ability, as I mentioned, इसमें आपको अरिथमेटिक और अलजेब्रा है और काफी कुछ चैलेंज इसमें हट गया है आपका. तो इनफैक्ट अगर आप जीमैट और जीआरई की बात करो, राइट, सो आई डोंट नो इफ एनीवन ऑफ यू हैज टेकन जीआरई. GRE scores are also accepted at these colleges. तो GRE और GMAT में फर्क ये है कि GRE में जो इंग्लिश है, जो वर्बल है, उसमें वोकैब बेस्ड 2 सेक्शंस हैं और आरसी है. CR भी उसी में आ जाता है. तो जो वोकैब बेस्ड सेक्शंस हैं, दे पोज लिटिल मोर चैलेंज टू पीपल हैव हर्ड than GMAT के. बट उसकी QA इज क्वाइट सिंपलर. QA GRE का जो है वो इससे आसान होता है. But I think now they have also reduced that level of difficulty in GMAT QA. So you have multiple factors: number, property, fraction, decimal, percentage, power, roots, average, probability, set theory, mixtures, allegations, ratio, proportion, descriptive statistics, pipe systems, monomial, ये algebra आ गई यहाँ पे, exponent, quadratic equation, inequalities, and all of these things, right? Permutation, combination, and progressions. These are all basically parts of algebra. So सिर्फ हमें ये दो एरिया टैकल करना है, और ज्योमेट्री which was one huge chunk has been taken off. So that's the good part about QA. Then you have data insights. So यहाँ पे, as I mentioned, there are 5 parts: that data sufficiency, graphic interpretation, table analysis, 2-part analysis, multi-source review. इसमें अब आपको क्या क्या टेस्ट कर रहा है वो, राइट? योर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, कि आप अलग अलग सोर्सेज से कैसे इंफॉर्मेशन लेके उसको एनालाइज करके और इंटरप्रेट करते हो. इंफॉर्मेशन सिंथेसिस, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स कंबाइन करके, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग. सो इसमें कुछ क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन भी होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. तो इस तरह की स्किल्स आपकी इसमें टेस्ट होती है. नाउ जीमैट स्कोरिंग में जो अगर आप देखेंगे कि पहले का जो पैटर्न था, तो उसमें 200 to 800, right? Somebody would get score. Now 205 to 805. ठीक है. अब ये नंबर ऑफ एबिलिटी लेवल्स, ये पहले भी इतने थे और अभी भी इतने हैं. तो नंबर ऑफ एबिलिटी लेवल्स में बेसिकली फर्क लेकिन क्या आया, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे. अब न्यू जीमैट में जो ये आपका, आपने अगर किसी का स्कोर देखा होगा तो Q लिखा था 50 लिखा था और V41 ऐसा स्कोर होता था, राइट? एंड देन देयर यूज्ड टू बी अ कंपोजिट स्कोर 700 या 680 या 650. तो इनके बेसिस पे वो कैलकुलेट होता था. तो अब हो क्या गया है, हुआ क्या था कि जो पहले, अब ऑब्वियसली देन देयर यूज्ड टू बी अ परसेंटाइल आल्सो. ठीक है. अब आपका जो Q है, तो ये Q 90 तक जा सकता है और V भी 90 तक जा सकता है और DI भी 90 तक जाएगा. तो ये इसकी रेंज है स्केल स्कोर की, और इसके बेसिस पे आपका टोटल फाइनल स्कोर निकाला जाएगा. नाउ इसमें नंबर ऑफ एबिलिटी पॉइंट्स मतलब बताने का ये है कि जैसे पहले क्या होता था कि जो लोग टॉप परसेंटाइलर्स होते थे, राइट, 76 से 100 परसेंटाइलर, इनके एबिलिटी पॉइंट्स 14 हुआ करते थे. मतलब ये कि जैसे कोई 100 परसेंटाइलर है, फिर 99 है, फिर 98 है और 97 है, तो सब जो किसी को Q50 आया या Q51 सपोज आया, तो वो ये सब कवर कर देता है, राइट? सो Q51 वाले को 97 परसेंटाइलर बना दिया. whereas he could have the ability to be 100 परसेंटाइलर also. फिर Q50 जो था, उसको
उसमें फिर उसकी काफी नीचे तक जाती थी, मतलब द डेटा, द एबिलिटी पॉइंट्स वर फ्यूअर जो हायर रैंकर्स के लिए। ठीक है, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू अप्रिशिएट दिस और नॉट, बट यहाँ पे मोर ग्रैनुलर हो गया है। तो आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका परसेंटाइल उस हिसाब से काफी इंप्रूव हो जाएगा। जैसे पहले ये एक फ्लॉ था थोड़ा, इनका जो क्वांटिटेटिव था उसमें ज्यादा ये फिगर आउट करता था कि जो आपका क्वांटिटेटिव स्कोर था कई बार सपोज वो 98 परसेंटाइल दिखा रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन योर क्वांटिटेटिव, बट यो एक्चुअली जो नया है इसमें आपको 99 परसेंटाइल है। तो यहाँ फर्क आ गया ना, आपका एरर हो गई काफी। बिकॉज सपोज 100,000 पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम, सपोज 1 लाख लोगों ने दिया है, राइट, तो हर परसेंटाइल 1000 के हिसाब से हो गया। तो यहाँ पे यू आर मोर देन 98,000 पीपल, बट यू हैव 2,000 पीपल अहेड ऑफ यू, लेकिन यहाँ पे यू हैव 1,000 पीपल ओनली अहेड ऑफ यू। तो जो आपका एक स्कोर आता था उसके बेसिस पे परसेंटाइल जो था वो आपकी एबिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा ज्यादा ग्रैनुलर कर दिया। इसमें अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है। इफ समबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, डोंट गेट इनटू too much of depth into it. We'll learn as we go along. But the point that I'm trying to just make from this is that because the number of ability points have increased for the higher scorers, therefore your score will reflect a better percentile or if you have the ability. Otherwise 97 और 98 वाले एक ही हो जाते हैं, 96, 97, 98, 95 वालों को एक ही मिल जाता। तो अब जो है आपकी डिस्टिंक्शन ज्यादा अच्छी है। तो ये सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज आया है इसके अंदर। ऑलराइट, तो दिस इज, अब देखो इसमें और क्या फर्क है अगर हम देखें पिछले जीमैट के जो जो एडिशन था और अभी का जो एडिशन है उसमें, इफ यू टॉक अबाउट एडेप्टिवनेस, सो दिस टेस्ट वाज आल्सो एडेप्टिव इन द सेंस कि आपके जो आप जो आंसर कर रहे हो उसके बेसिस पे अगले क्वेश्चन का डिफिकल्टी और ईज लेवल डिसाइड होता था। So you start with a medium level difficulty question. If you answer it correctly, next question will be of a higher difficulty level, and so on and so forth. And वहां पे आपको मार्क करना ही रहता था, पर नेसेसरली मार्क अभी भी करना है आपको। दैट मीन्स यू कैन नॉट मूव अहेड विदाउट मार्किंग द करेक्ट आंसर, बट द डिफरेंस नाउ इज दैट यू कैन कम बैक एंड रिव्यू 3 क्वेश्चंस, ठीक है, इन ईच सेक्शन। मतलब किसी भी सेक्शन में आप 3 क्वेश्चंस के आंसर चेंज कर सकते हो, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। पहले आप मार्क करते चले गए, एंड में पहुंचे, देन यू कांट गो बैक एट ऑल, ओके, यू हैव टू बी देयर। यहाँ पे अब क्या है कि आपने समझो 45 मिनट्स का है, यू बुक मार्क्ड द क्वेश्चंस विच यू नीड टू रीअसेस, या आपने उनको फ्लैग कर लिया कि आपको इसको थोड़ा आंसर को देखना है। देन यू कैन इन द लास्ट 5 मिनट्स लेट्स से यू कैन कम बैक एंड रिव्यू योर आंसर्स, चेंज कर सकते हो आंसर आप, जो कि पहले नहीं कर सकते थे। दैट्स अगेन अनदर एडवांटेज दैट दे हैव गिवन। ठीक है, 3 क्वेश्चन तक आप पर सेक्शन में रिव्यू कर सकते हो। So that's another difference they brought about, or क्या difference, or I don't know. That's something which comes to my mind. Section choose कर सकते हो, okay? You can choose your order of sections. Choose order of sections as you want. There is no compulsion that first QA will come, then VA will come, or then data insight will come. You can choose VA, then DI, and then QA. That's your choice. Then what else? बस ठीक है, बाकी तो I think more or less I think I've covered what I wanted to say here. So let me hear from you if at all you have any questions based on whatever we've discussed. Hi, sir. Yes, hi, Muskan. बोलिए. Sir, I did my graduation in 2021, and since then I've been pursuing CFA. So I don't have any work ex. So will I be eligible for ISB? No. So for that, how can I like apply? No, so for you need to get 2 years of work ex. See, you can appear for GMAT. There is no restriction because GMAT score is valid for 5 years. So you Okay, can. sir. So I can lock in the score right now. You can lock in the score right now, and then you can get 2 years of experience, and then you can apply. Okay, sir. Thank you. बिकॉज जो भी, जैसे मैंने बताया आपको कि अभी जिस भी साल एप्लीकेशन देना है आपको, तो वहां पे उस साल तक आपको 2 years का वर्क एक्स लॉग इन हो जाना चाहिए आपका। Okay. For that financial year, you're saying? यस, यस। Okay. तो Okay, sir. अभी अगर आप एज अ फ्रेशर चाहोगे तो आपको फिर बाकी की इंस्टीट्यूट जो हमने डिस्कस की 2 year प्रोग्राम वाली, वहां पे आपको कंसिडर कर सकते हैं। Okay. Fine. Just for ISB, I'll have to first have work ex, then apply. Yes. That's Okay, sir. Okay, got it. Okay.
All right. Any other question? And one more thing, sir. For how long this core is valid? 5 years. 5 years. Okay. इस पे अब थोड़ा सा फर्क बस ये है कि जैसे ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स है ना, जो IMT और ये सब लोग हैं, ये कुछ पिछले 2-3 साल के मांगते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफाई करते हैं. बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो जैसे IIMs हैं फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स, या फिर ISB है, या फिर बाहर की यूनिवर्सिटीज है, वो लोग 5 साल तक का वैलिड रखते हैं इसको. ये जो हमारे यहाँ के कुछ कॉलेजेस हैं, ये 2 या 3 साल कई बार वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं. तो उसमें एनी केस आपको, उसमें तो आप अभी भी जा सकते हो, उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं. Okay, sir. Got it. Right. All right. Any other query? Anyone before? Yeah. So, Yes. sir, what are the other prestigious B schools in India that take GMAT scores? देखो मैं आपको फिर से वहीं पे लेके आ जाता हूँ. So these are the Okay. colleges. है ना? Okay. I think you were not there in the beginning. Yeah. So 2-year MBA college accepting GMAT score for Indian students. इंडियन स्टूडेंट्स. हाँ, अब देखो IIM में तो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए तो GMAT ले लेता है. जैसे किसी को IIM के बाद या बैंगलोर जाना है, एंड इफ यू गॉट अ फॉरेन पासपोर्ट, तो आप अप्लाई करके आ सकते हो GMAT के थ्रू. लेकिन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक तो SPJ IMR इज द बेस्ट वन अमंग दीज, एंड देन आई सेड IFT में बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स है, वो एक्सेप्ट करता है GMAT. And then you have these IMTs and IMI and Xavier, Great Lakes, Tapni, AJ, Goa, 4 and all these things. ठीक है, माइका is a good college here. But ठीक है, अब लाल बहादुर and BIMTech तो I'm sure nobody would want to target right away. IFMI, Goa 4 are okay, all right, and AJ, तो ये आप target कर सकते हो. ठीक है, best is obviously SPJ and IIFT among these. And then you have IMT, IMI and Xavier. And of course ISB, that but which comes with a work-ex. So for that you need a work-ex. So all these EU and American universities also take Yes. work-ex as the नहीं criteria. नहीं यूरोपियन देखो वहाँ पे 2 टाइप के कोर्स होते हैं. एक MIM होता है और एक MBA होता है, मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट. ये फ्रेशर्स भी ले लेते हैं So यूरोप में. this is a new course, right? MIM? नहीं, Relatively new course. नहीं है, चल रहा है काफी टाइम. फ्रांस में और इसमें काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आप अगर यूरोप में देखेंगे तो. बट ये फ्रेशर्स ले लेता है. लेकिन अगर US में जाना है आपको, तो US में तो 3 इयर्स मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस है. ठीक है, तो वो आपको डिपेंड करेगा कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है. US में बाय एंड लार्ज यू नीड अ वर्क एक्स ऑफ 3 इयर्स. So, but in US, MIM is like MS in US, right? People don't go for MBA if they're not US में नहीं experienced. होता है. आई हैव नॉट हर्ड ऑफ US में. Yeah, so there is MS. हाँ, वो I've heard. MS is different, right? MS is basically for engineering students and all other specialists. No, actually, I've seen a lot of universities, they are providing MS in business analytics and whatever is similar to what it is provided in MIM in Europe. Correct. और वो more of technical orientation होता है उसमें. Yeah. So they're also giving us some particular colleges or universities are giving STEM programs. So it is an additional advantage for like commerce background students to have visa. पर उसके लिए आपको आई थिंक उसके लिए GRE, आई डोंट नो, GMAT भी लेगा. GRE तो लेते ही लेते हैं. I think GMAT is valid because GMAT is valid. GRE is only for like engineering background. Okay. GRE. So GMAT is valid. All right. Okay. So now, obviously now next is key coaching, right? So obviously now we would like to start a batch. So I would now so on average, let's say what I feel is कि ये जो आपका इसमें syllabus है, right? So that can be covered in 3 months. अगर हम देखें तो 3 months में आप इसको cover कर सकते हैं. ठीक है. So now एक rough, अगर just on a very rough, on a high level, if we look at the number of classes, so we have VA, right? So we have CR and RC. So you can have 16 sessions here. We have data insights where we can have 12 sessions, and we have QA where we have, let's say, 20 sessions. So overall, let's say if we have a 48 class course,
into 2 hours, so which is a 96-hour course, and this is spread over 3 months, right? So which gives us 16 classes per month, right? Which means 4 classes roughly per week. So that's the kind of structure that will be worked out. Now, iske aage, the timings, durations, and iske aage, let's say the fee structure and all that I'll have to work out and let you know, depending upon how many people are interested, and also because some people might be interested in doing all of this, or some people might be interested in doing only maybe part of it. Some they might want to do on their own. So I don't know really कि कितना है. तो एक बार अगर आप लोगों की तरफ से input आएगा, then I'll be able to provide you with a little more concrete data on this. So let's say among you all sitting here, if I kind of try to get a little bit of a ballpark thing. So how many of you would be keen? Forget about the modalities, mechanics of it. How many would be keen to join for this? Let's first get a rough idea. Right? तो VA में कितने join करना चाहेंगे? QA में कितने हैं? DI. So VA में कितने करना चाहेंगे? If you can raise your hand. So I have a question before this. हाँ बोलिए. So how does this all lecture thing goes with our CAT preparation, right? We are doing CAT also now. Yes, very good. So in terms of timing, or you are in terms of syllabus? So in terms of syllabus as well as the clash of the syllabus and timing also. नहीं, timing तो खैर obviously clash नहीं कराई जाएगी. Right. Syllabus का ऐसा है, देखो अब part of this CR obviously we are covering there, ना, part of it cover कर ही रहे हैं और करते रहेंगे. RCs are different, है ना. इसके yes, आपको जो हम वहाँ RC करते हैं उससे वो तो है, but थोड़े से different होते हैं इसके RC. तो इसमें अगर हम ये कहें कि नहीं जो हम क्लास में कर रहे हैं कैट की उससे काम हो जाएगा, तो देन आई वुड नॉट बी सपोर्टिंग दैट आर्गुमेंट. अच्छा, क्वेश्चन आ गया, डज एसपीजे IMR एक्सेप्ट GRE स्कोर्स? नो, आई हैव नॉट सीन GRE स्कोर्स ऑन देयर साइट. उसने GMAT लिखा हुआ स्पेसिफिकली, सो आई वुड से नो, GRE का मन नहीं पड़ा. जैसे आप IIM की साइट पे देंगे तो जाएंगे तो वहां पे तो GMAT GRE दोनों लिखे हुए, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ. हाँ, तो यस, कमिंग बैक टू शुभांशु's क्वेश्चन. तो इसमें पार्ट जैसे कवर हो गया, पार्ट वहां पे कवर होगा, तो वील हैव टू फिगर इट आउट कि कैसे उसमें से जो हमें एडिशनली वो करना है, क्योंकि थोड़ा फोकस्ड इसमें करना पड़ेगा हमें, है ना. CR हम वहां पे भी कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वहाँ CR डायरेक्ट नहीं आता है, तो हम उसको यूज कर रहे हैं मोर टू बिल्ड आवर RC skills rather than standalone CR. So it will need more intense practice. This CR will need more intense practice, because obviously आपको अगर skill level develop करना है तो maybe करीब आप समझ लो कि आप हर एरिया में नहीं करके भी अगर आप बात करोगे 300-400 क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए, right? Unless you attempt 300 odd questions in CR, 300 odd questions in RC, and likewise in these areas, तब तक इसमें तो और भी तो आपकी वो स्किल डेवलप इतनी नहीं हुई. तो इस तरीके से देख सकते हैं, राइट. सो VA में आई हैड फ्यू पीपल, 2-3 लोग ही दिखे थे मुझे, 2-3 लिख लेता हूँ मैं. चलो, व्हाट अबाउट QA? ओके, एंड DI ठीक है. तो एक 2 दिख रहे हैं. देखो मतलब इसमें ऐसा है ना कि so if let's say we don't get a batch size which is good enough, right? If I don't get a batch size which is good enough, so what I'll definitely do is recommend to you. फिर मैं आपको recommend कर दूंगा. I'll be obviously available for any kind of help, guidance or mentorship. There's no doubt on that. But I'll then be guiding you कि मेरे हिसाब से आपको ये फिर करना चाहिए, right? This should be your best course of action. Because obviously if I don't get that sufficient strength, then it doesn't really work out. ठीक है. तो वो बैच स्ट्रेंथ अभी बनेगी नहीं बनेगी वो थोड़ा सा एक मुझे डाउट है. तो लेट मी जस्ट फिगर दैट आउट, ठीक है. और नहीं होगा तो देन आई विल सजेस्ट टू यू द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, राइट. इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि और एडिशनली कुछ ओवर एंड अबव आई कैन डेफिनेटली प्रोवाइड हेल्प, या मतलब अगर आप लोग अपने आप कर रहे हो तो देन डेफिनेटली वी कैन लुक एट समथिंग. सो इट विल बी मोर ऑफ अ टेलर मेड अप्रोच टू ईच. So we have a lot of students currently वो attend कर रहे हैं क्लास, तो उनमें से भी बहुत सारे होंगे.
हाँ हो सकता है, हो सकता Right, है. so I'll take a view and then work it out. So then maybe by tomorrow I'll have the answer for you. so Yeah. so one more thing, like we have 48 classes, you have decided to take 48 classes. Apart from this, you said we have to do 300, 300, नहीं 300. apart from that नहीं मतलब include करके इसमें Okay, okay. include करके ना this would include क्लास वाले भी और this would include जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे वो भी. देखो ऑफिशियल गाइड ही में अगर आप करने जाओगे तो ऑफिशियल गाइड में भी काफी सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली पूरे नहीं है. ऑफिशियल गाइड में भी इतने क्वेश्चन नहीं है, 200 क्वेश्चन में भी मिल देंगे आपको एक एक एरिया के. उसके अलावा जो ऑफिशियल क्वेश्चन हैं बहुत सारे ऑफिशियल क्वेश्चन देयर आर इन हंड्रेड्स अवेलेबल. सो दैट ऑल्सो यू विल नीड टू डू. सो ऑल दैट आई शेयर विद यू इन एनी केस. वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा जो करना है. ठीक है. तो आई थिंक इफ देयर इज एनी अदर नो अदर क्वेश्चन देन वी कैन वाइंड अप द सेशन. I'll come back to you. The action point is on me after working it out. But individually, you can connect with me. So to take a further course of action. All right. Okay, guys. So thank you. Thank you, sir. Thank you.